हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर प्लस। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 क्लोजिंग एट 17,706.85 विद माइनस 121.15 इन नंबर एंड 0.68 in percentage. You can see the direction how market work today, actually starting at this level and going in negative side and till this position you can see, and then try to recover, but finally closing at this level in red. If we look at overall performance, then you can see open at 17,863 and previous close 17,828, low 17,574.05 and a high 17,863. If we look at gainers and losers group, then you can see in 50, 31 under advancers and 19 under decliners, and in 31, 28 under 0 to 2%, 3 under 2 to 5%, and in decliners 16 under minus 2 to 0%, 1 under minus 5 to minus 2%, and 2 under minus 5 to minus 10 to minus 5%. If we look at stock wise, then you can see in the gainers list Nestle India at the first position with 4%, then Power Grid 2.36, State Bank of India 2.07, Coal India 1.82, Britannia Industry 1.74, Hindalco Industry 1.58, Kotak Bank 1.37, IndusInd Bank 1.36, SBI Life Insurance 1.34, Grasim Industry 1.33, Asian Paints 1.19, ITC 1.15, Ultratech Cement 1.14, Bharat Petroleum 1.04. All these above 1% in gainers list and others below 1%. That is, you can see in this list Bajaj Finance, ONGC, Titan, Hero Motocorp, Mahindra & Mahindra, Hindustan Unilever, Tata Motors, Reliance Industry, Esser Motor, Adani Ports. These kind of stocks you can see all these in gainers list below 1%. HDFC Life, ICICI Bank, JSW Steel, Maruti Suzuki India, Axis Bank and UPL at the end with plus 0.02%. And if we look at losers list, then you can see in the losers list Infosys at the first position with minus 9.42%. तो ये बड़ी गिरावट है आईटी के सेक्टर में, आप देख सकते हैं सभी। इसके बाद टेक महिंद्रा है, एसएल टेक्नोलॉजी है, लार्जन टर्बो, विप्रो, आईटी के स्टॉक आप देख सकते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सभी आज माइनस की लिस्ट में है। बिगेस्ट लूजर इज Infosys, that is minus 9.42%, then Tech Mahindra minus 5.24, SL Technology minus 2.77, then NTPC minus 1.99, LT Larsen Turbo minus 1.98, Wipro minus 1.89, HDFC minus 1.61, Tata Consultancy Services minus 1.55, HDFC Bank minus 1.52, Cipla minus 1.02. All these in a negative direction in losers list and above 1%. If we look at below 1% in losers, then you can see in this list Bharti Airtel, Tata Consumer Products, Bajaj Auto, Davis Laboratories, Sun Pharmaceutical, Tata Steel, Apollo Hospitals, Bajaj Finserv and Dr. Reddy's Laboratory at the end with minus 0.01%. This is losers list. If you look at technical chart of Nifty 50, then you can see how 5-minute candles appear today, but at the starting level आप देख सकते हैं मार्केट जो स्टार्ट हुआ है आज का 9:15 पे कितनी बड़ी गिरावट है ये कैंडल बना है। देन फिर से उसके बाद रेडी और यहाँ पे आके जो हमने देखा था कि थोड़ा संभलने की कोशिश, बट ये क्या है कि स्टार्टिंग में इतनी बड़ी गिरावट हो गई, फिर वापसी नहीं कर पाया, मार्केट माइनस में ही रहा, और finally closing at this level you can see, and all the indicators indicating, actually currently indicating that market will be in a negative actually when tomorrow will open the market. But if we look at forward, then you can see here that changing the cloud here in a green and red, then
therefore this is suspicious, and all the indicators indicating that market will be in a negative direction tomorrow, at least in the morning. After that, yeah, it can be in a any direction, but at least as per the indicator current situation, this is in a negative direction. And as we know that if today is negative, tomorrow will be positive, then negative. This is all this is stock market, ये लगा रहता है. तो निफ्टी 50 ये है. अगर हम बीएसई सेंसेक्स देखें तो बीएसई सेंसेक्स क्लोजिंग एट 59,910.75 विद माइनस 520.25, 0.86 in percentage. You can see the direction. This is the direction. We can say that same as nifty 50 here goes down and then moving in upside, but still in a negative direction, closing in red. Yeah, direction is in positive, but closing in negative. If we look at overall performance, open at 60,385.90, previous close 60,431, today's low 59,442.47, and high 60,407.86. If we look at gainers and losers group, then you can see in 30 16 under advancers and 13 under decliners and 1 at the neutral position, and in advancers in 16 13 under 0 to 2%, and 3 under 2 to 5%, and 1 at neutral position, and in decliners in 13 9 under minus 2 to 0%, 2 under minus 5 to 2%, and 2 under minus 10 to minus 5% range. If we look at stock wise, then you can see in gainers list Nestle India with a 4.03% at the first position, then Power Grid plus 2.29, State Bank of India 2.04, Kotak Bank 1.31, and then Ultratech Cement 1.26, ITC 1.20, Asian Paints 1.13. All these are above 1% in gainers list. And if you look at losers list, then you can see if we look at stocks below 1% in gainers list, that is Bajaj Finance, Titan, Mahindra and Mahindra, Hindustan Unilever, Tata Motors, Reliance Industry, and ICICI Bank at the end with a plus 0.24%. Bajaj Finserv by mistake in this list. Yeah, actually that is in a red and should be in a losers list. If you look at losers list, then you can see Infosys again at the first position with minus 9.40%, then Tech Mahindra minus 5.25, SL Technology minus 2.72, NTPC minus 2.02, LT Large and Turbo minus 1.98, Wipro minus 1.81, HDFC minus 1.61, Tata Consultancy Services minus 1.58, HDFC Bank minus 1.55. All these above 1% in losers list, and others below 1%, that is Bharti Airtel, Sun Pharmaceutical, Tata Steel, Axis Bank at the end with a minus 0.02%. If we look at technical chart of BSE Sensex, then you can see that how 5-minute candles appear today. Actually first candle again is a big, and in morning after opening the market this appeared, and this is a very big. And then you can see the direction whole day he worked till this position below cloud and then goes in a cloud. एंड जैसा कि हमने निफ्टी 50 में देखा था कि माइनस था, इंडिकेटर्स भी माइनस बता रहे थे, बट अगर हम डायरेक्शन देखें तो जैसे यहाँ पे क्लाउड के नीचे से चल रहा था, फिर ये क्लाउड को क्रॉस करते हुए बीच में आ गया, मतलब ये कल ऊपर जाएगा और ऊपर की तरफ ही रहेगा. देन ठीक है, करंटली ऑल द इंडिकेटर्स इंडिकेटिंग्स या इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, RSI at the 59 in 2080 range, but market will be in a positive direction tomorrow. Yeah, this is a prediction today's. तो कल मार्केट के पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं, ठीक है. तो ये है बीएसई सेंसेक्स, और निफ्टी 50 भी रहेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि जब इधर दिख रहा है इस तरह से सिचुएशन. If we look at other markets and in indexes and NSE changes, you can see NSE के इंडेक्सेस में निफ्टी PSU बैंक में सबसे बड़ी बढ़त है
3.13%। देन इंडिया विक्स 3.02, ये भी ग्रीन में आप देख सकते हैं, मार्केट रेड में। देन FMCG 1.03, निफ्टी रियल्टी 0.99। तो ये ऊपर के दो ही हैं जो कि 1% से ज़्यादा के हैं। इंडिया विक्स तो प्लस में है, लेकिन इसलिए मार्केट माइनस तो 2 है, बाकी उससे कम में 1% से कम में आप देख सकते हैं रियल्टी, ऑटो, नेक्स्ट 50, मेटल, कुछ इस तरह के हैं सभी इंडेक्सेस इसमें लिस्टेड हैं। और आज कहें तो 50-50 का मामला है, रेड वाले भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, बट ग्रीन वाले में सबसे एंड में लोवेस्ट इज निफ्टी माइक्रो कैप 250 इज विद प्लस 0.06%। देन इसके ठीक ऊपर आप देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों हैं। And in losers in red you can see mid cap 150, quality 50 at the first with a minus 0.07%, and Nifty IT minus 4.71, biggest loser. And then Nifty India Digital 4.29, only these two above 1% in red, in losing direction. This is an NSC indexes. If we look at BSC indexes, then you can see in this list BSC oil and gas at the first position with plus 1.19%. Only this one is above 1% in BSC indexes list, and others below 1%, that is BSC energy, realty, FMCG, metal, mid cap select. All these indexes in green, and small cap select, financial, all this in lowest in green. If we look at losers, then you can see here all cap lowest loser, that is minus 0.33, then 500 0.35, maximum is BSC IT 4.77, tech 4.56। आप देख सकते हैं यही दो है जो कि मैक्सिमम बढ़ा था 1% से ज़्यादा वाले में। तो ये है सभी इंडेक्सेस। अगर हम एनएससी से एक डिस्कस कर रहे हैं, एनएससी में सबसे ज़्यादा बढ़ता है पीएसयू बैंक में, क्लोजिंग एट 3923.90, 119.15 अंक की बढ़ाता है और 3.13% में। आप देख सकते हैं डायरेक्शन कितना बुलिश डायरेक्शन है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओपन एट 3792.65, प्रीवियस क्लोज 3804.75, and low 3789 और हाई 3931.90। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 12 में से सभी 12 एडवांसर्स में ही है, और उसमें से 9 है 2 से 5% के रेंज में, 2 है 5 से 10% और 1 है 15% से ज़्यादा की बढ़त में। अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो सभी एक्चुअली गेनर्स की लिस्ट में ही है, और इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक है पहले नंबर पे 15.83% की बढ़त है। देन इंडियन बैंक 7.82, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5.08, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 4.73, यूको बैंक 4.36, इंडियन ओवरसीज बैंक 4.03, महिंद्रा बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.99, बैंक ऑफ इंडिया 3.76, बड़ौदा 2.89, नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक 2.20, कैनरा बैंक 2.13, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.07। आप देख सकते हैं सभी कुछ इस तरह से बढ़ाता है आज बैंक के स्टॉक में, कोई भी 1% वाले नहीं, सभी 2 और उससे ज़्यादा है। तो यह निफ्टी पीएसयू बैंक आज का परफॉर्मेंस। अब हम एक डिस्कस करते हैं बीएससी की लिस्ट से। तो बीएससी में सबसे ज़्यादा बढ़त है बीएससी ऑयल एंड गैस, और यह है 17,919.54 पे, क्लोजिंग है प्लस 211.59 अंक में एंड 1.19% में। और देख सकते हैं डायरेक्शन आप बुलिश डायरेक्शन है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ओपन एट 17,789.95, प्रीवियस क्लोज 17,707.95, टुडेज लो 17,679.14 and high 17,933.96. If we look at gainers and losers group, then in 10 9 under advancers and 1 under decliners, and in 9 7 under 0 to 2%, 2 under 2 to 5%, and decliners under minus 2 to 0% range. If you look at stock wise, then you can see in gainers list Adani Total Gas
3.51% की बढ़त है। देन पेट्रोल नेट LNG 2.55, गेल 1.94, गेल में है 1.94, देन गुजरात गैस 1.57, भारत पेट्रोलियम 1.16, इंद्रप्रस्थ गैस 1.14, all these above 1% in gainers list and others below 1%, that is Hindustan Petroleum 0.96, ONGC 0.82, Reliance Industry 0.47, all these in gainers list. If you look at losers list, then you can see there are only one, and that is Indian Oil Corp with minus 0.04%. This is BSC Oil and Gas today's performance. Now we are going to see top gainers and top losers in all, and top gainers changes. Here you can see precision camshafts. This is with 20%, and then Pokarna 19.99, Coral India Finance 19.94, Cubex Tubing 19.88, Pritika Engy Compo Limited 19.86. This is biggest losers list. This is biggest gainers list, you can see, and in this list Gayatri Rub and Cam 9.86 इस लिस्ट में सबसे नीचे है। तो अच्छी बढ़त के साथ है मार्केट में। अगर देखें तो अगर 9.86%, 10% के करीब है इस लिस्ट का सबसे एंड मैक्सिमम तो 20% है। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्टॉक लिस्टेड हैं। इसमें ग्रीटेक्स इंडस्ट्री, एरवी लेबोरेटरीज, ये है वर्धमान, पॉलीटेक। अगर हम लूजर्स का लिस्ट देखें तो लूजर्स एंड ऑल ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड चेंजेस। हियर यू कैन सी विकास प्रोप एंड ग्रेनाइट 12.50%, निर्माण एग्री 9.95, GTPL 9.68, इन्फोसिस 9.42। आप देख सकते हैं इन्फोसिस इस लिस्ट में भी है, टॉप लूजर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पे। बड़ी गिरावट है आज। और इस लिस्ट में सबसे एंड में सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर ही है, 5.76% की गिरावट के साथ। टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स ये आज का ओवरऑल ये रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।